So good morning students. In the previous class we have discussed about the word problems by solving the substitution method and some of the linear equation two variable questions solving by elimination method. Now today I am going to discuss 3.4 exercise, some of the word problems, that is page number 57 NCERT textbook. Now let's come to the first question of the second one. Now I am going to read the question. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 by 2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? So let the fraction be x upon y, numerator upon denominator. According to the question, we are having, if we add 1 to the numerator plus 1 and subtract 1 from the denominator, y minus 1, the fraction becomes 1. Now just to cross multiply, and x plus 1 equals to y minus 1, x minus y equals to minus 1 minus 1, x minus y equals to minus 2. That is our first equation. Now the second condition, according to the question now, if we are going to add only 1 to the denominator, it becomes 1 by 2. Just cross multiply, 2x is equals to y plus 1, 2x minus y equals to 1. Now we have to solve these two equations by the elimination method. So on solving equation 1 and 2, as in the previous class I have told you about the elimination method by equating the coefficients. 2x minus y equals to minus 2. Here the y coefficients are equal. So what we do here, 2x minus y, here it is equals to 1. So same sign, so we have to subtract the equation. So sign change, minus x is equals to minus 3, x is equals to 3. So from equation number 2, as we got x equals to 3, so 2 into x, that is 3, minus y equals to 1, 6 minus y equals to 1, minus y equals to minus 5, y equals to 5. Therefore our fraction is x upon y is equals to 3 upon 5, and that is our answer. Now let's move to the second question. 5 years ago, Nouri was thrice old as Sonu. Let the present age of Nouri be x years and let the present age of Sonu be y years. Now according to the question, 5 years ago means the Nouri's age will become x minus 5 and Sonu's age will become y minus 5, and the condition is given that it is thrice as old as Sonu. So we multiply with 3 here, x minus 5 equals to 3, y minus 15, x minus 3, y equals to minus 10 by transposing. Now again according to the question, second condition is given that 10 years later, Nouri will be twice as old as Sonu. So 10 years later means 10 साल बाद x plus 10 equals to y plus 10, and it is twice, so 2 times. So x plus 10 is equals to 2y plus 20, x minus 2y is equals to 10. So by same method, you can solve these two equations and get the value of x and y, and that will be your answer for the present age of Nouri and Sonu, and that you have to do it. Now let's move to the question number 3. Question number 3.
the sum of the digits of a two-digit number is 9. This is very important question. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. Let the digit at tens place be x and let the digit at units place be y. So our number will become 10x plus y. So according to question, it is given that the sum of the digits is given to us, that is 9. So we get an equation x plus y equals to 9. And now according to the question, it is given that 9 times this number 10x plus y is twice the number obtained by reversing the order of the digits. On reversing the order of the digits, new number will be y यहाँ आ जाएगा, x यहाँ चले जाएगा, 10y plus x. Now according to question, 9 times of this number, 9 into 10x plus y is equals to twice the number obtained by reversing the digits, 10y plus x. So it becomes 90x plus 9y, 20y plus 2x, 90x minus. According to the second condition, 9 into 10x plus y equals to 2 into 10y plus x. So after simplification, we are getting an equation second, 8x minus y equal to 0. So by elimination method, y will be eliminated here as both the variable y here are having the opposite sign. So the equations will be added on adding the equations. So plus y minus y cancel, x plus 8x, 9x equals to 9, x equals to 1. On substituting x equals to 1 in equation number, x plus y equals to 9, that equation y equals to 8. So our number 10x plus y is equals to, that is 10 into 1 plus 8 equals to 18 is our answer. Now in this exercise, the next two questions will be homework for you that you have to do it. Now I am proceeding to the next method of solving the linear equation in two variables, and that is our cross multiplication method, or you can say the formula method. So our fourth method of solving is cross multiplication method or formula method. So this method, listen carefully. Just the next exercise, I am taking the first question, 3.5. Which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution, infinite many solution? In case there is a unique solution, find it by using the formula or cross multiplication method. So our first question is x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equals to 0. Now what we have to do it, first listen here carefully. First I am going to explain you the conditions, the concept behind this problem. Whenever we have to solve by cross multiplication method or formula method, first we compare a1 equals to 1, b1 equals to minus 3, c1 equals to, when we transport towards the right, it becomes 3, and a2 becomes equals to 3, b2 becomes equals to minus 9, and c2 becomes equals to 2. After getting all the coefficients of both the equations, we have to find out their ratio in the standard form. a1 by a2, 1 by 3, b1 by b2, minus 3 by minus 9, that is 1 by 3, and c1 by c2 is equals to 3 by 2. So clearly we can see that a1 by a2 is equals to b1 by b2, but it is not equal to c1 by c2. So here
A1 by A2 is equals to B1 by B2 is not equals to C1 by C2. That is means our second condition is satisfying. So the given equations has no solution. अगर हमारा तीन कंडीशन में से सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 नॉट इक्वल टू c1 by c2, या तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई होती है और वो कंडीशन थी a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, अगर तीनों इक्वल हो जाते हैं उस कंडीशन में हमको सिर्फ यही लिखना है सेकंड वाले में कि नो सॉल्यूशन, और आगे प्रॉब्लम बनाने का जरूरत ही नहीं है क्योंकि x और y की कोई वैल्यू आएगी ही नहीं। और अगर थर्ड कंडीशन है a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2 आ जाता है किसी प्रॉब्लम में, तो हम लिखेंगे द गिवन इक्वेशंस हैज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। उसके आगे कुछ करने का x और y की वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, खाली हमको x और y की वैल्यू तभी निकालनी है फॉर्मूला मेथड से जब पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2। सो नाउ मूव टू आवर कॉन्सेप्ट। दो कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, नो सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन का। अब हम चलते हैं, अगर किसी प्रॉब्लम में हमें ये मिल जाए a1 by a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 by b2, देन unique solution. The given equations will have a unique solutions. So under such circumstances, what we have to do? We arrange the coefficients of the two linear equations in the following manner. First variable is our x, थोड़ा डिस्टेंस पे y लिखिए, फिर थोड़ा डिस्टेंस पे -1, क्योंकि हमारा फॉर्मेट क्या होता है ax plus by इक्वल टू c, तो c को जब अपन ट्रांसपोज करते हैं तो उसका नेगेटिव कोफिशिएंट बनता है। नाउ x के थोड़ा पहले हमारे पास इक्वेशंस क्या रहती है जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये हमारे पास रहता है। तो हम x से थोड़ा पहले b1 और b2 की वैल्यू लिखेंगे। इट इज नॉट b1 डिवाइडेड बाय b2, जो वैल्यू इक्वेशन में है b1 और जो वैल्यू b2 वही लिखना है। x और y के बिटवीन में आप लिखेंगे नेक्स्ट c1 एंड c2, उसके बाद y और -1 के बीच में लिखेंगे a1 और a2, और x के थोड़ा पहले और -1 के थोड़ा सा बाद में आप y के कोफिशिएंट्स लिखेंगे b1 b2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई टॉप टू बॉटम, और फॉर्मूला में बीच में माइनस आएगा, बॉटम टू टॉप, y के लिए भी टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप, -1 के लिए भी टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। Once again you see, if we get a1 by a2 not equals to b1 by b2, then there will be a unique solution. Under such circumstances only we have to follow this technique. We have to arrange the coefficients of the equations in the following manner. You just write down x, थोड़ी दूर बाद -1, थोड़ा दूर में y फिर -1, x के थोड़ा पहले और y के थोड़ा बाद में थोड़ा सा गैप रखते हुए b1 b2 लिखना है y के कोफिशिएंट्स, और x और y के बीच में कांस्टेंट्स c1 c2, y और -1 के बीच में a1 और a2 करना है। अब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला यूज्ड, अब x अपॉन टॉप टू बॉटम b1 c2, बीच में माइनस रहेगा, बॉटम टू टॉप b2 c1, y अपॉन c1 a2 टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप इक्वल्स टू -1 अपॉन a1 b2 टॉप टू बॉटम माइनस बॉटम टू टॉप। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है जिसे हम अप्लाई करेंगे यूनिक सॉल्यूशन कंडीशंस के लिए, और हम x और y की वैल्यू निकालेंगे। सो लेट्स मूव टू वन ऑफ द प्रॉब्लम। So now I am going to take one of the problem.
from the exercise 3.5. 2x plus y is equals to 5. 2x plus y is equals to 5 and 3x plus 2y is equals to 8. Question number 2. Here first we compare the coefficients. a1 की value 2, b1 की value 1, don't write y, and c1 is 5, a2 is 3, b2 is 2 and c2 is 8. Now I am going to take all the ratios. a1 by a2, 2 by 3, b1 by b2, 1 by 2, c1 by c2, 5 by 8. So clearly we can see that here a1 by a2 is not equals to b1 by b2, so it has a unique solution. So now we have to arrange their coefficients in the following manner to get the value of x and y. So first x, then y, then -1. x के थोड़ा पहले और y के थोड़ा बाद में अपने को b1 और b2 लिखना है. 1 2 1 2 और x और y के बीच में अपने को लिखना है c1 c2 5 8 और y और -1 के बीच में लिखना है 2 और 3. अब हमारा टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप. सो फॉर्मूला हमारा जो है x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1, y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 माइनस 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1. अब x अपॉन देखेंगे 1 इंटू 8 8 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 10, बीच में माइनस आता है. y अपॉन 5 इंटू 3 15 माइनस 8 इंटू 2 16 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 2 4 एंड 3 इंटू 1 3, बीच में माइनस. ये हो गया x अपॉन -2 y अपॉन -1 अपॉन 1. अब x की वैल्यू जब हमें निकालनी है तो फर्स्ट और थर्ड वाले को अपन लेंगे. सो x बाय -2 इक्वल्स टू -1 बाई 1. क्रॉस मल्टीप्लाई x की वैल्यू हो गई 2. जब y की वैल्यू निकालनी है तो सेकेंड और थर्ड रेशियो लेंगे. तो y अपॉन -1 इक्वल्स टू -1 अपॉन 1, y इक्वल्स टू 1. सो दिस इज आवर वैल्यूज फॉर x and y. Now we have to check whether our answer is correct or not. So x equals to 2, 2 into 2 4 and y 1, 4 plus 1 5. Correct. Second question, 3 into 2 6 and y 2 into 1 2, 6 plus 2 8. So our answer is 100% correct. Now in the same way you have to solve the rest of the questions, that is exercise 3.5 page number 62. I have solved the question number 1 first and the second question in the same way of the first question, third question and the fourth one you have to solve it. But first you have to compare it. If it is a unique solution, then only you have to proceed. Otherwise, for the two conditions, no solution and finite many solution, only you have to verify and you have to just write down that they are having no solution or they are not having infinite many solution. Now let's move to the question number 2. Question number 2. Find the values of a and b. Does the following of the linear equation have infinite many solution? तो इक्वेशंस हमको जो दिया हुआ है वो 2x plus 3y equal to 7 and a minus b into x plus a plus b into y equals to 3a plus b minus 2. अब हमें यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है ताकि हमें
हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। इस a और b की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा। तो यहाँ पे पहले हम कंपेयर अगर कर ले, a1 का वैल्यू 2, b1 का वैल्यू 3, c1 का वैल्यू 7 और यहाँ पे a2 का वैल्यू a माइनस बी, b2 का वैल्यू a प्लस बी और c2 का वैल्यू 3a प्लस b माइनस 2 है। और फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट many solutions, we know that our condition is that a1 by a2 is equals to b1 by b2 is equals to c1 by c2। मतलब तीनों रेशियो इक्वल होते हैं और हमें यहाँ पे वैल्यूज मालूम है। यहाँ पे हमको अलग अलग वैल्यूज नहीं निकालना है, हमको वैल्यू अब सभी में पुट अप कर देनी है। तो पहला a1 है 2 अपॉन a2 a माइनस बी, b1 है 3 अपॉन a प्लस बी, C2 है 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2, इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले इक्वेशन 1 से ये दोनों रेशियो को मैं सॉल्व करता हूँ। 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल्स टू 3 अपॉन a प्लस बी, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 इंटू a प्लस बी, 3 इंटू a माइनस बी, 2a प्लस 2b इक्वल टू 3a माइनस 3b, 2a माइनस 3a माइनस 3b माइनस 2b माइनस a माइनस 5b, a इक्वल्स टू 5b। ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब जैसे कि मैंने फर्स्ट इक्वेशन से अभी मैंने सॉल्व किया पहला और दूसरा लेके, अब मैं दूसरा और तीसरा लेके सॉल्व करता हूँ। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 अगेन now I am going to take 3 upon a plus b is equals to 7 upon 3a plus b minus 2, cross multiply 3 into 3 9a, 3b minus 6, 7a plus 7b, 9a minus 7a 2a, 3b minus 7b, that becomes equals to minus 4b and equal to this 6 I am going to transpose towards the right। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सभी टर्म्स जो हैं 2 से डिवाइड हो जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा a माइनस 2b इक्वल्स टू 3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। a की वैल्यू 5b है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। 5b माइनस 2b इक्वल्स टू 3, 3b इक्वल्स टू 3, b इक्वल्स टू 3/3 1। जैसे ही b की वैल्यू आ गई और a की वैल्यू क्या थी मेरे पास 5b थी, a इक्वल्स टू 5b, तो b की वैल्यू पुट अप कर दिया गया, तो a की वैल्यू मेरे पास आ गई 5। so that is our answer। once again you can listen carefully। here it is given that you have to get the value of a and b for which the given equation will satisfy for infinitely many solution। so first you compare a1 b1 c1, a2 b2 c2 and condition for infinite many solution is a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2। यहाँ ध्यान रहे कि आप मिसिंग वैल्यूज निकाल रहे हैं, इसलिए आपको एक साथ वैल्यू पुट अप कर देनी है, अलग अलग नहीं करनी है। सो 2 अपॉन a माइनस बी, 3 अपॉन a प्लस बी, 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस 2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन की सहायता से हमको पहले ये दो लेना है, फिर ये दो लेना है और हमको दो लीनियर इक्वेशन बना लेने हैं इन ए वेरिएबल a एंड b। तो 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी हमने यहाँ से लिया और सॉल्व किया, तो हमें मिला a इक्वल टू 5b। फिर हम सेकंड और थर्ड पार्ट लेते हैं इक्वेशन 1 का, सॉल्व किया और हमें मिला a माइनस 2b इक्वल टू 3। अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूशन लगाइए, चाहे एलिमिनेशन लगाइए, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाइए, किसी भी मेथड से अपन किसी भी प्रॉब्लम पर बनाए तो सभी में आंसर सेम आएंगे, आंसर डिफरेंस नहीं होंगे। सो a इक्वल टू 5b आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट हियर। सो 5b माइनस 2b इक्वल टू 3b, 3b equal to 3, b equals to 1। since a equals to 5b, value of b is 1, so 5 into 1 equals to 5। that is our answer for this equation। now let's move to the second questions, second one, that is you have to find out the value for no solution, value of k। now
I have to get the value of k for no solution. For which value of k the following equation will have no solution. Our equations are 3x plus y equals to 1, 2k minus 1 into x plus k minus 1 into y equals to 2k plus 1, equation number 2. Now, we have to compare a1 equals to 3 in the same way, b1 1 and c1 equals to 1, a2 equals to 2k minus 1, b2 is equals to k minus 1 and c2 is equals to 2k plus 1. And now it is asked for no solution. So for no solution, as we know that a1 by a2 is equals to b1 by b2 is not equals to c1 by c2. Now I am going to substitute their values. That is a1 by a2 is 3 upon 2k minus 1, 1 upon k minus 1 not equals to 1 upon 2k plus 1. अब ये दो इक्वालिटी रेशियोज है, इन दोनों को अपन लेके k की वैल्यू सॉल्व कर देंगे. 3 upon 2k minus 1, 1 upon k minus 1, 2k minus 2 equals 3k minus 3 equals to 2k minus 1, 3k minus 2k equals to minus 1 plus 3. So k is equals to 2. That is our final answer for getting the condition of a no solution.